Hello everyone, welcome. Today we are going to discuss CSIR December 2012 questions from solid state chemistry. So the first question is, the angle between two planes represented by the Miller indices 110 and 111 in a simple cubic lattice is, so there are four options, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So अगर हम ये दोनों इंडिसेस जो दिया गया है, हम एक को H1, K1 और L1 और दूसरे को H2, K2 और अगर L2 लेते हैं तो जो फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू H1 टाइम्स H2 प्लस K1 टाइम्स K2 प्लस L1 times L2 divided by 2 to the power H1 square plus K1 square plus L1 square times H2 square plus K2 square plus L2 square. सो हम लोग इस फॉर्मूला में अभी वैल्यू डाल देते हैं. सो cos थीटा इज इक्वल टू 1 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर टाइम्स root over of 1 square plus 1 square plus 1 square. So 1 plus 1 plus 0 divided by root 2 times root 3. So इसका वैल्यू आता है 2 by root 2 times root 3. तो अगर रूट 2 कैंसिल होता है तो ऊपर में रूट 2 रहता है, जो कि है रूट 2 बाई रूट 3. सो अभी अगर हम थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि है कॉस इनवर्स ऑफ रूट 2 बाई रूट 3. सो जो कॉस इन रूट 2 बाई रूट 3 का उसका जो वैल्यू है वो है 0.816. सो जो थीटा का जो वैल्यू है वो आता है 35.27 डिग्री. एक्चुअल में इस साल जो आंसर आया था उसमें से कोई भी आंसर सही नहीं था, तो सारे के सारे ऑप्शन गलत है. पर ये वाला जो फॉर्मूला है उसको ज़रूर याद रखना. ऐसे ही सिंपल बस HKL का वैल्यू डालना है और लास्ट में कॉस इनवर्स का वैल्यू निकालना है. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटल क्रिस्टलाइजेस इन एन FCC स्ट्रक्चर द यूनिट सेल ऑफ साइड 500 पिकोमीटर इफ द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. The molar mass of the metal is equal. So जो फॉर्मूला है वो है रो, जो कि है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, एंड मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन सेल, दैट इज Z टाइम्स their molecular mass divided by Avogadro's नंबर टाइम्स वॉल्यूम, जो कि है AQ. तो हमको ऑलरेडी क्या क्या दिया गया है, A जो कि दिया गया है 500 पिकोमीटर. सो रो डेंसिटी दिया गया है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब.
और हमको एक दिया गया है FCC। सो FCC का हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे कि FCC का जो Z है उसमें 4 एटम्स रहते हैं। सो उसका वैल्यू है 4। सो अभी हम वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर हम M को एक साइड पर ले जाते हैं तो वैल्यू जो बन जाता है रो टाइम्स Na टाइम्स AQ डिवाइडेड बाय Z, कि सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करना। जो पिकोमीटर का वैल्यू है वो है 10⁻⁻12 मीटर, और उसको अगर हम सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करते हैं जो बन जाता है 10⁻10 सेंटीमीटर। सो रो जो कि दिया गया है 1.33 ग्राम टाइम्स सेंटीमीटर क्यूब टाइम, और एवोगाड्रो का नंबर सबको पता है जो कि 6.022 टाइम्स 10⁻23, और जो A का वैल्यू है वो है 500 टाइम्स 10⁻10 सेंटीमीटर क्यूब, और Z है 4। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं जो कि बन रहा है 1.33 ग्राम टाइम्स सेंटीमीटर क्यूब टाइम्स 6.022 टाइम्स 10⁻23, और यहाँ से अंदर में जो कि है 5 टाइम्स 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब, और Z है 4। तो ये है 1.33 टाइम्स सेंटीमीटर क्यूब टाइम 6.022 टाइम्स 10⁻23। सो 5 का क्यूब है 125, और जो पावर क्यूब होने के बाद बन जाएगा 10⁻24, जो कि 8 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब। अभी सॉरी मैं यहाँ पे ग्राम बोल रही, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, और Z का वैल्यू अभी हम लोग सारे नंबर्स को एक साथ पे ले आते हैं। 1.33 टाइम्स 6.022 टाइम्स 125 टाइम्स 10⁻23 टाइम्स 10⁻24 डिवाइडेड बाय 4। सो 1.33 टाइम्स 6.022 टाइम्स 125 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे आता है 10⁻1, और यहाँ पे जो ग्राम का यूनिट रह गया था वो ग्राम। सो इसका वैल्यू जो आता है वो आता है 25 ग्राम। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस इज क्लोज टू। सो पैकिंग फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम occupied by the atoms divided by the total volume of the unit cell. Packing fraction is equal to number of atoms times volume of atoms divided by total volume of cell. So number of atoms in simple cubic cell
is equal to 1 because only at 8 corners atoms are present, each contribute 1 by 8. So volume of each atom, that is volume of atom, each atom is just the volume of the sphere, that is 4 by 3 pi r cube. And total volume of the cell, total volume of the cell is equal to a cube, where a is the side. So now we will put everything into the formula, that is packing fraction is equal to 1 times 4 by 3 pi r cube divided by a cube. Now you can see here that there is a difference to cancel between r on the numerator and a in the denominator. So उसको क्या करना है, सो हम लोग को पता है जो सिंपल क्यूबिक का जो पैकिंग है वो ऐसे पैक होता है, ये है r, ये है r, सो ये जो टोटल है वो है a, सो a इज इक्वल टू 2r. ओके, सो हमको ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. सो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 4 by 3 pi r cube divided by 2r cube. सो जो कि 4 by 3 pi r cube divided by 8 r cube. So 4 times pi is 22 by 7 times 3 was already there, and times 8. So it is 88. 21 times 8. So if you just divide it, so it will be, total will be 88 times 168. So this will come out to be 0.52. So the correct answer is option C. Now the last question is crystal A diffracts from 111 200 plane but did not diffract from 110 plane, while the crystal B that diffracts from 110 200 but not from 111. So from the above we may conclude that so there is an option which is which lattice, either it is FCC or BCC. So you can see here the table. So first thing, for simple cubic all reflections with integers are allowed, and for BCC only if h plus k plus l, if that summation h plus k plus l is even, then only it's allowed. And for FCC, if all are odd or all are even, in that scenario it will be allowed. For hexagonal it is if minus h plus k plus l equal to 3n, where n is an integer, in that scenario it will be allowed. And for diamond cubic, reflections are allowed if h, k and l are same parity. Parity means so either all are even or all are odd, and h plus k plus l equal to 4n. In that scenario it is diamond cubic. So first scenario, so if you just see here, this is odd, 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 and this is even, even, even. So this is
allowed in case of FCC. You can see the FCC if either all are even or all are odd. So in this scenario it is odd, 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 even, even, even. But in this scenario it is odd, odd, even. So that's why it is not allowed. So A is FCC. So next is, so this is odd, odd, even, 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 even. So in this scenario here the all are even, but here all are not odd. So in this scenario we have to add them. So this is 1 plus 1 plus 0 is equal to 2. So in this scenario 2 plus 0 equal to 2. So both are even. So this is BCC. So B is BCC. So the correct answer is A, where A is FCC and B is BCC. So in the previous video I have asked a question, okay, in which year did Marie Curie win a Nobel Prize in Chemistry and Physics? So for physics she won in 1903, but for chemistry she won in 1911. So the correct answer will be option C. And for today's video, so the question is, which elements did Marie Curie discover alongside her husband Pierre Curie? First is uranium and plutonium, second is polonium and radium, third is radium and plutonium, and fourth is uranium and polonium. I hope you have enjoyed this video. Thank you.